वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियन नेवी ट्रिपल कमीशनिंग। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने कमीशन की हैं 3 इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप्स, INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे कोलकाता में। हर शिप का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग स्ट्रेटजिक रोल है और एक कॉमन चीज़ जो है कि लगभग 75% से ज़्यादा के कॉम्पोनेंट्स जो इसमें लगे हैं वो इंडिजिनस हैं। तो आत्मनिर्भर भारत जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है उसका सक्सेस दिखा रहा है ये। अब देखते हैं INS दुनागिरी। ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनाई गई है। लार्जेस्ट ऑफ द 3 है ये। और स्टेल्थ का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि रिड्यूस्ड रडार और सेंसर विजिबिलिटी है इसमें, मतलब ये कम्प्लीटली इनविजिबल तो नहीं है। ठीक है। इसकी सिस्टर शिप्स हैं INS नीगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, विंध्यगिरी। और इसमें ब्रह्मोस सरफेस टू एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, MFSTR रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, ये सब लगे हुए हैं। एंटी सबमरीन वेपन्स भी हैं। अब INS संशोधक एक सर्वे वेसल है। इसका जॉब है कि ये मेजर और मैप करेगा सी को। इक्विप्ड है ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स से, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स से और मल्टी बीम इको साउंडर्स से। ये लास्ट शिप है संधायक क्लास SVLs में। और इसलिए ये मैटर करता है क्योंकि अंडर वाटर टेरेन की नॉलेज होना कि कितनी डेप्थ है, करंट्स कैसे हैं, सी बर्ड क्लटर कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफ नेविगेशन के लिए सबमरीन्स और वॉरशिप्स की। अगली शिप है INS अग्रे। ये सबसे छोटी है एज़ कम्पेयर टू जो है अगर हम बाकी दोनों को देखें, लेकिन ये सबसे स्पेशलाइज्ड है। ये एक तरह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, अर्नाला क्लास की। इसमें लाइट वेट टॉर्पेडोज हैं, इंडिजिनस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं, सोनार सिस्टम्स हैं। इसका रोल ये रहेगा कि ये डिटेक्ट करेगी और डिस्ट्रॉय करेगी सबमरीन्स एनिमी कंट्रीज़ की जो लिटोरल वाटर्स में हमारे को थ्रेटन कर रही हैं। अब स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस ये है कि हमने 3 डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज़ एक सेरेमनी के अंदर ही कमीशन कर ली हैं। इंडियन ओशन जो है बहुत ही कंटेस्टेड है। इंडिया की मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब जो है वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, आइलैंड टेरिटरीज़ और ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन तक फैल चुकी हैं। और जितनी भी शिप्स हैं ये डोमेस्टिकली GRSC कोलकाता ने ही बनाई हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डोंगफेंग 17। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV ने पहली बार एयर की है फुटेज, लॉन्च की डोंगफेंग 17 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये चाइनीज सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर के बीच में है। एक मोबाइल लॉन्चर पर यह माउंटेड रहता है। इसके जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल DF-ZF है। और मिसाइल जो है वो लॉन्च होता है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, जैसे एक क्लासिक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। और वॉरहेड जब री एंटर करता है एटमॉस्फेयर में तो एक ग्लाइड होता है एटमॉस्फेयर के साथ अपने फिन्स के थ्रू। और जब ये ग्लाइड हो रहा होता है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है। इसकी स्पीड लगभग मैक 5 to 10 होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाभा फोर्ट। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। वॉलंटियर्स ने रिसेंटली क्लियर किया है 4 ट्रॉली लोड्स ऑफ गार्बेज 18th सेंचुरी नाभा फोर्ट से, जो कि लोकेटेड है नाभा सिटी विद इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इसने सर्व किया एज अ रॉयल रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ नाभा प्रिंसली स्टेट फुल्कियान डायनेस्टी का। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, एक्सपैंड किया लगभग 150 साल तक। और इवन महाराजा हीरा सिंह जैसे जो रूलर्स थे उन्होंने इसकी कंट्रीब्यूशन इसमें इसकी जो है कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया। इस फोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग एंग्लो सिख वॉर्स, जब नाभा जो है वो अलाइन हुआ था ब्रिटिश के साथ। फोर्ट में फीचर हो रहा है ट्रेडिशनल इंडियन मिलिट्री आर्किटेक्चर, जिसमें थिक वॉल्स हैं, बेस्टन्स हैं, लार्ज गेट्स हैं और रेयर वॉल पेंटिंग्स हैं जो डिपिक्ट करती हैं महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी को एक यूनिक कूलिंग सिस्टम को बेसमेंट में, जिसको सर्द खाना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोचार। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टडीज़ ने इंडिकेट किया है कि बायोचार जो है वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को 10 से 30% बढ़ा सकता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को 10 से 25% बढ़ा सकता है, खासकर उन सॉइल्स में जो कि लो इन न्यूट्रिएंट्स हैं। तो बायोचार जो है वो एग्रीकल्चर वेस्ट को हीट करके लो ऑक्सीजन कंडीशंस में बनाया जाता है। एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है वेस्ट को मैनेज करने का और कैप्चर करने का कार्बन को। ये होल्ड कर सकता है कार्बन को सॉइल में फॉर 100 to 1000 ईयर्स। अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो इम्प्रूव करेगा वाटर रिटेंशन। बायोचार जो है वो बहुत पोरस है, मतलब जो वाटर और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है और ये एक सूटेबल इन्वायरमेंट देगा फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और मॉडिफाइड बायोचार जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है CO2 को फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज एज वेल। अब बायोचार जो है उसको एज अ लो कार्बन ऑल्टरनेटिव भी एक्सप्लोर किया जा सकता है बिल्डिंग मटेरियल्स में और बिल्डिंग मटेरियल्स को एक स्टेबल कार्बन सिंक बनाने में।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु जो है वो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स कोस्टल वाटर्स में डिप्लॉय करने लगा है। तो ये तमिलनाडु के जो कोस्टल वाटर्स हैं ऑफ रामानंतपुरम कोस्ट, वहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। और ये एक एम्बिशियस मैरीन हैबिटेट रिस्टोरेशन इनिशिएटिव का जो है ये एक पार्ट है अंडर सेकेंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये काम करेगा। 6 न्यूली डेवलप्ड रीफ डिज़ाइंस जो कि क्रिएट किए गए हैं एडवांस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। अब ये जो न्यू मॉड्यूल्स हैं इसमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज का यूज़ किया गया है, मल्टीपल क्रिवेसेस, फोल्ड्स और अटैचमेंट सर्फेसेस हैं ताकि इसकी बायोडाइवर्सिटी एनहांस हो सके। जो इसको मैन्युफैक्चर किया गया है बिना आयरन रीइंफोर्समेंट के और मटेरियल इनोवेशंस का यूज़ किया गया है। अब अगर हम देखें तो ये ज़्यादा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफर करता है, हायर सरफेस एरिया ऑफर करता है, स्पीशीज स्पेसिफिक हैबिटेट डिज़ाइन ऑफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं खुरासनी इमली। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खुरासनी इमली जो है फ्रूट जो है मंडू की आइकॉनिक बाओबाब ट्री का, उसको GI टैग दिया गया है। तो खुरासनी इमली या टैमरिंड जो है ये फ्रूट है मंडू मतलब मध्य प्रदेश के आइकॉनिक बाओबाब ट्री का। इसको मांडव इमली भी कहा जाता है। एक लाइट ग्रीन फ्रूट है जिसका एक टैंगी स्वीट सार फ्लेवर है। ये पैक्ड है विद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल मिनरल्स। और ट्राइबल हीलर्स इसको बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं डाइजेस्टिव एलिमेंट्स, फीवर और फटीक को ट्रीट करने में। अब GI टैग क्या होता है? ये एक तरह से साइन है उन प्रोडक्ट्स पे यूज़ किया जाता है जिनका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। टिपिकली यूज़ होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, वाइन एंड स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर। और ये GI टैग जो है वैलिड रहता है 10 साल तक और इसको बाद में रिन्यू भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेरियार रिवर। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा है एक यूनिफाइड अथॉरिटी की जरूरत है क्लैनलीनेस ऑफ पेरियार रिवर को मॉनिटर करने के लिए। अब पेरियार रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, लाइफलाइन है ये केरला की, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन और पावर जनरेशन का। ये राइज होती है शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में नियर बॉर्डर विद तमिलनाडु। और ये फ्लो होती है नॉर्थ में थ्रू पेरियार नेशनल पार्क इनटू पेरियार लेक। और फिर बाद में ये फ्लो होती हुई वेम्बनाद लेक में जाती है और उसके बाद जो है एम्प्टी हो जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, कोची के पास। वन ऑफ द फ्यू पेरेनियल रिवर्स ऑफ द रीजन है ये। लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसके ऊपर है इडुक्की हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये बर्थ प्लेस है शंकराचार्य की भी, जो कि एक ग्रेटेस्ट अद्वैता फिलोसफर थे। वो कलाड़ी में बॉर्न हुए थे जो कि सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ पेरियार रिवर इटसेल्फ। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Indian Navy's triple commissioning. This topic is important for your security section. So Indian Navy has commissioned 3 indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata, and each ship is performing a distinct strategic role. More than 75% of the components in these ships are indigenous, which is reflecting a growing success of Atmanirbhar Bharat initiative in defense manufacturing. So the first one is INS Dunagiri, which is a stealth-guided missile frigate under Project 17A, and it is one of the largest. It is the largest of the 3. And stealth here basically means reduced radar and sensor visibility. Does not mean complete invisibility. It is equipped with BrahMos surface-to-surface missiles, medium-range surface-to-air missiles, MFSTR radar, sonar, electronic warfare systems, and anti-submarine weapons. And its sister ships in Project 17A include INS Nigiri, Himgiri, Taragiri, Udaygiri, Vindhyagiri. Okay, so the next ship is INS Sanshodhak, which is a survey vessel basically. It's a large survey vessel, and its job is to measure and map the sea. It is equipped with autonomous underwater vehicles, and it is the last ship of the Sandhayak class SVLs. Why does it matter? Because knowing the underwater terrain, that is depths, currents, seabed clutter, and it is essential for safe navigation, submarine route planning, port management, disaster relief, and coastal development. So what is Agre? So Agre is the smallest of the 3, but is the most specialized of them. It is an anti-submarine warfare shallow watercraft of the Arnala class. It has lightweight torpedoes, indigenous anti-submarine rocket launchers, and sonar systems. Its role is to detect and destroy the submarines in littoral waters. So why this commissioning of 3 ships is important? Because it adds 3 distinct capabilities in one ceremony itself. Indian Ocean is becoming increasingly contested, and India's maritime responsibilities now span the Arabian Sea, Bay of Bengal, island territories, and broader Indo-Pacific. And all 3 ships were built domestically by GRSE Kolkata.
So the next topic is Dongfeng 17. This topic is important for your security section. Chinese state broadcaster CCTV has for the first time aired footage showing the launch of Dongfeng 17, which is a hypersonic missile. So it's a Chinese solid-fueled medium-range hypersonic ballistic missile. It is said to have a range of 1800 to 2500 kilometers. It is mounted on a mobile launcher. It carries a hypersonic glide vehicle, DFZF. This missile is launched outside the atmosphere like a classic ballistic missile, and this warhead, when it re-enters the atmosphere, it glides into the atmosphere with its fins, and while gliding it changes its direction and maneuvers, and its speed is approximately Mach 5 to Mach 10. So the next topic is Nabha City. Nabha Fort. This topic is important for art and culture section. Volunteers have recently cleared 4 trolleys of loads of garbage from the 18th century Nabha Fort, which is located in Nabha City within the Patiala district of Punjab. It served as the royal residence and administrative center of the Nabha princely state of the Fulkian dynasty. It was constructed and expanded for over more than 150 years. Even notable rulers like Maharaja Hira Singh contributed to its grandeur with decorative frescoes, intricate carvings, and spacious courtyards. This fort played a significant role during the Anglo-Sikh Wars, with Nabha aligned with the British. This fort features traditional Indian military architecture with thick walls, bastions, and large gates designed for defense. And it has rear wall paintings depicting Maharaja Ranjit Singh's army and a unique cooling system in its basement known as the Sardkhana. So the next topic is biochar. This topic is important for environment section. Studies have indicated that biochar can improve crop productivity by 10 to 30% and water holding capacity by 10 to 25%, particularly in soils which are low in nutrients. So biochar is made up by heating agricultural waste in low oxygen conditions. It offers a sustainable alternative to manage waste and capture carbon. It can hold carbon in the soil for 100 to 1000 years. So, in terms of agriculture, it can improve water retention, particularly in semi-dry and nutrient-depleted soils. Biochar is highly porous, and it contributes to aggregating soil particles, holding water, and creating a suitable environment for microorganisms. In carbon capture applications, modified biochar can absorb CO2 from industrial exhaust gases. Biochar can also be explored as a low carbon alternative to building materials and makes the building materials more stable carbon sink. So the next topic is India's first 3D printed artificial reef modules. This topic is important for environment section. So Tamil Nadu is set to deploy India's first 3D printed artificial reef modules in coastal waters. So this will be deployed along the Ramananthapuram coast. So it is part of the ambitious marine habitat restoration initiative under the second phase of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So it will serve as a pilot to assess the performance of 6 newly developed reef designs created through advanced 3D printing technology. So this new module features complex geometries with multiple crevices, folds, and attachment surfaces designed to enhance biodiversity. They are manufactured without iron reinforcement and incorporate material innovations. They allow greater structural complexity, higher surface area, and species-specific habitat design. Okay. So the next topic is Khurasan Imli. This topic is Khurasani Imli. This topic is important for environment section. Recently, Khurasani Imli, which is the fruit of Mandu's iconic baobab tree, has been awarded the GI tag. So it is the fruit of Madhya Pradesh iconic baobab tree. It is known by one more name, that is Mandav Imli. It has a light green. It is a light green fruit with a tangy, sweet sour flavor. It grows across villages in Mandu region. It is packed with vitamin C, antioxidants, and essential minerals. Tribal healers have long used it to treat digestive ailments, fever, and fatigue. So, what is GI tag? It is a sign which is used on products which have a specific geographical origin. It is used for agricultural products, foodstuffs, wine and spirit drinks, handicrafts, and industrial products. And this GI tag is valid for 10 years, following which it can be renewed. So the next topic is Periyar River. This topic is important for our environment section. So Kerala High Court has recently stressed the need for a unified authority to monitor the cleanliness of the Periyar River. So Periyar River is the longest river in Kerala. It is known as the lifeline of Kerala because it is an important source of irrigation and power generation. It rises in the Shivagiri hills of Western Ghats range near the border with Tamil Nadu. It flows north through Periyar National Park into Periyar Lake. It further flows into the Vembanad Lake before emptying into the Arabian Sea north of Kochi. It is one of the few perennial rivers of the region. It plays a major role in generating hydroelectricity as well. The largest hydroelectric project is the Idukki hydroelectric project, which generates a significant portion of electricity for Kerala. So this
Periyar River is important because it is also host to the, or it is to the birthplace of Shankaracharya, the greatest Advaita philosopher, who was born at Kaladi, which is also situated on the banks of this Periyar River. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.